Hello everyone, this is Kuldeep Kartaliwal and you are watching my channel Kuldeep's Biology. Today I am here to discuss about the reproduction in human beings. Humans use sexual mode of reproduction. It needs sexual maturation, which includes creation of germ cell. Like germ cells are gametes only, like egg and in egg for in case of female and in male, this is sperm. And this period of sexual maturation is known as puberty. And then most important thing is you should know every parts of male reproductive system and female reproductive system internally. And hormones are also important. Some structures are very important. So first we are going to deal with male reproductive system. The formation of male germ cells takes place in testis, male reproductive organs. Testis is male reproductive organ in case of in humans. Pair of testes are located inside scrotum. Scrotum is structure that is present outside the abdominal cavity. And testis release a male sex hormone that is known as testosterone. That is very important hormone responsible for maleness in humans. Every character that shows maleness uh, that shows testosterone also. If testosterone is functioning normally, only then male character will be visible normally. Regulate the production of sperm. And these are the roles, these are the functions of testosterone. Next function, first function was the production of sperms, and second function of testosterone hormone is to bring about change in appearance seen in boys at the time of puberty. Puberty में जो भी changes आते हैं males में वो testosterone के कारण आते हैं. The sperms along with secretion of prostate gland, seminal vesicle together constitute semen. इसके अलावा sperm के अलावा जो प्रोस्टेट ग्लैंड हैं और सेमिनल वेसिकल हैं दोनों सिक्रीट करती हैं जो भी मेनली जो मटेरियल सिक्रीट करती हैं वो सीमेन बनाने में रिस्पॉन्सिबल होता है विच इज़ रिलीज्ड एंड मेड टू एंटर इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट ड्यूरिंग कॉपुलेशन जो स्पर्म के मोमेंट में हेल्प करता है मेन थिंग इज दैट एंड सम पार्ट्स आर गिवन यू शुड नो व्हाट इज टेस्टिस and vast difference, these are very important terms. What is vast difference, where is this is prostate gland, and seminal vesicles are also shown in diagram. You can go through any diagram which is given in your book also and learn at least what is vast difference. Urinary bladder is also given, and seminal vesicles, and some prostate glands, like every part of male reproductive system should be clear, at least 4 to 5 parts you should learn. Next thing is female reproductive system, and before going to switching to female reproductive system, I would like to show you in testis. Obviously sperm will form, and these sperm will move through vast difference to the through this pipe and go to uh, go to this route through this route only, and seminal vesicles prostate gland will give secretions and it will help for movement of sperm. There will be common passage for urine as well as semen. Next is female reproductive system. In female reproductive system, germ cells or egg cells are produced in ovaries. These structures are ovaries, and like structures are given. With hand-like structure, these are ovaries. And this part is known as fallopian tube, and this is funnel of fallopian tube. Fallopian tube is also known as oviduct. Okay. Female germ cells or eggs are produced in ovaries located in both sides of abdomens. So both side
एब्डोमेन के दोनों साइड्स जो ओवरीज प्रेजेंट होती हैं। When girl born, ovaries already contain thousands of immature eggs. जैसे ही फीमेल चाइल्ड बॉर्न होता है उसके अंदर ऑलरेडी इमेच्योर एग्स होते हैं। एट पबर्टी सम ऑफ दीज एग्स स्टार्ट मेच्योरिंग, धीरे धीरे जैसे पबर्टी आती है कुछ एग्स वहाँ से मेच्योर होके मंथ बाय मंथ ओवरीज में से रिलीज होते रहते हैं। ओके, नाउ सी दिस डायग्राम. What should be clear from this diagram? You should know the part at least what is ovary, what is oviduct or fallopian tube. And this part is known as uterus. In uterus, implantation will occur. जब fertilization हो जाएगी तो ब्लास्टोसिस्ट यहाँ पे प्लेस हो जाता है। वहाँ पे ही ब्लास्टोसिस्ट होता क्या है, जाइगोट बनने के बाद जब उसमें नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होने लगते हैं डिवीजन होने के बाद, तो वो यहाँ पे आके अटैच हो जाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन होने के बाद वहीं पे एम्ब्रियो धीरे धीरे डेवलप होने लगता है। वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर फिटस में, और वहीं पे डेवलपमेंट कंप्लीटली होगा। कहाँ पे डेवलपमेंट होता है, यूट्रस में और वॉर्म। ओके, नेक्स्ट थिंग इज एग इज कैरिड फ्रॉम द ओवरी टू बॉर्म थ्रू द फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब के थ्रू एग कैरी किया जाएगा ओवरीज में। दिस टू फेलोपियन ट्यूब यूनाइट इनटू इलास्टिक बैग, जिसे कि हम यूट्रस बोलते हैं। यूट्रस में ही बेबी का इम्प्लांटेशन होता है। यूट्रस ओपन इनटू विजाइना थ्रू अ सर्विक्स, सर्विक्स के थ्रू ओपन होता है यो यूट्रस। स्ट्रक्चर्स के नेम आपने लर्न रखने हैं। फर्टिलाइज्ड एग इज ऑल्सो कॉल्ड जाइगोट। जब एग फर्टिलाइज हो गया तो उसको जाइगोट कहा जाएगा। धीरे धीरे डिवीजन स्टार्ट हो जाएगी। अगर जाइगोट नहीं बना है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है, तो यूट्रस की जो इनर लाइनिंग की वॉल है वो उसकी थिकनिंग जो है दैट विल ब्रेक एंड कॉज ब्लीडिंग थ्रू विजाइना। दिस प्रोसेस इज नोन एज menstruation and it occurs at regular intervals of 28 days. The embryo gets nutrition from mother's blood. जो एम्ब्रियो है वो मदर के ब्लड से न्यूट्रिशन लेता है उस टिश्यू को जिसके थ्रू वो न्यूट्रिशन ले रहा है एम्ब्रियो, दैट इज नोन एज प्लेसेंटा. It provides large surface for glucose and oxygen to pass from mother to embryo. और जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वो भी मदर के ब्लड में भेजा जाता है। The time period of fertilization up to birth is known as gestation period. Like in human this is approximately 9 months. उसे हम gestation period कहते हैं। The sexual cycle menstruation in humans women continues up to age of 40 to 50 years. When menstruation cycle stops, that process is known as menopause. It also marks the end of reproductive life of women. Next is reproductive health, and important thing left, that is female sex hormone is known as estrogen and progesterone. Like we discussed in case of males, that is testosterone responsible for maleness. Similarly for femaleness, two hormones are responsible. One is estrogen and second is progesterone. And that's it for today, and in next video we will discuss about reproductive health. Thanks for watching. Take care. Bye bye.